Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we're here with another program of Kids Time, and as always we're learning together and teaching the viewers all over the world what we are learning. क्या हाल है आप सबका? प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रोग्राम में जो है वो इल्म के बारे में बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मज़हब जो है, हमारा मज़हब इस्लाम हमें क्या सिखाता है इल्म के बारे में और ये हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है। शुरू करें आज का प्रोग्राम। So today what we're doing is we've got a bit of a themed program today. We're learning all about why it's important to gain knowledge and learn. So we're going to start with the tilawat, which includes a prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما. And who's going to tell us what it means? Naveed. O my Lord, increase me in knowledge. जी, उर्दू ट्रांसलेशन सोहा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जी। Who can explain what are we asking Allah when we're saying this prayer? Aiza. We are asking him to help us with more knowledge. For example, if you're doing a test, maybe you want to read that dua so you do well. Yeah. It's a nice dua to say every day in the morning when you're going to school, because we're going to school to learn, so it's a nice prayer to say to start your day off with, to say, oh Allah, increase my knowledge, whatever I can do today, let me learn as much as I can. जी, और स्पेशली एग्ज़ाम्स के दिनों में तो हमें ऐसी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है कि बाज़ दफ़ा आप कोशिश करते हो, आप जो है वो कुछ बच्चे रट्टा लगाते हैं, है ना, सामने लिख के लगा लेते हैं और उनसे याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको भूल जाता है। तो जब हमारे पे कोई मुश्किल आती है तो हम किससे दुआ मांगते हैं? वरीशा? अल्लाह मियाँ से। तो ये हमारे लिए वो अल्फाज हैं जिनके साथ हम अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह मियाँ हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे नहीं याद हो रहा, तो ऐसे में ये दुआ जो है वो आप अल्लाह मियाँ से मांगो। तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनता है और इंशाल्लाह ये दुआ भी हमारी सुनेगा कि अल्लाह ताला ऐ मेरे रब मुझे इल्म में बढ़ा दे या मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। जी, और अब बारी है हदीस की। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकिल्लाह। And who's going to do the hadith? फरीद। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। And what does that mean? दानियाल। Acquisition of knowledge is obligatory upon every Muslim man and woman. जी, ट्रांसलेशन In Urdu? इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। So who can tell us a little bit about this hadith? What do they understand? What do you understand from it? Yes, Risha. That without benefits of knowledge, it's like gathering lots of treasure, but you cannot really spend it. What do you mean by that? Like when you learn things and you do not share them with other people, it's like gathering lots of treasure, but you can't spend so it. you're meant to learn things and teach others. That's a good thing. What about this? About it's obligatory upon every Muslim man and woman. So Allah's given us the knowledge that we have to learn. We have to acquire the knowledge, and He's also said it's
obligatory. That means it's a must. We have to do it, and it's important for every Muslim man and woman. We've got to remember that at the time the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, women were not given any rights, and they weren't able to go and learn and get knowledge. And so this is our opportunity to say that women as well as men, it's a must upon both that they must learn as much as possible. प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ये दुआ सिखाई और कहा कि ऐ मेरे रब मुझे इल्म में बढ़ा दे। तो उनकी लाइफ जो है, हमारे प्यारे आका की लाइफ हमारे लिए एक नमूना है और हमें भी उस पर अमल करना चाहिए। और ये हदीस भी आज हम आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हमारी ज़िंदगियों में जो है इल्म की कितनी अहमियत है। आप लोग दिल लगा कर पढ़ते हैं या नहीं? कौन बच्चा नॉटी बनता है कि मैंने आज स्कूल नहीं जाना, मैंने पढ़ना नहीं है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है ना? कौन करता है ऐसे? समीता करती है सिर्फ। क्या मुश्किल लगता है? सुबह उठना मुश्किल लगता है या पढ़ना मुश्किल लगता है? दानिया? सुबह उठने में मुश्किल लगता है। सुबह उठना मुश्किल That probably means you haven't gone to bed early enough if you can't get up in the morning. है ना? अगर आप रात को जल्दी सो जाए तो सुबह उठना मुश्किल नहीं लगता। अपने लिए दुआ करनी चाहिए। अगर आप दुआ करोगे तो फिर अल्लाह मियाँ आपको खुद ही जो है वो सुबह आपका दिल करेगा उठने का, है ना? And in the Holy Quran it says, can those who know be like those who know not? So it's not the same as if you know something, it's much better to know something and so you can explain it to others, as you were saying. And if you don't know something, it's completely different. You're not able to understand things. And exactly what Saqib said, that if people didn't study and learn and find new inventions, then electricity would never have been discovered and we wouldn't be able to have all these things that we are able to have, lights and other things that come from it. That's why it's so important to learn, not just in your educational, in your academic life, but in your religious life as well, that you need to learn more and more and more so you can understand. When you are explaining to other people why you believe your religion, why you believe Islam, why you believe being an Ahmadiyya Muslim is the best way to be, you're not going to be able to explain it to other people unless you know and understand your own religion. And you should know and understand what other people believe so you can explain to them why you believe what you do. जी बच्चों, जैसा कि शाज़ेबा जी ने बताया कि इल्म जो है वो किताबों का इल्म जो है वो भी इंसान के लिए अहम होता है। इसके अलावा भी मैं इसको आगे बढ़ाती चलूँ कि जैसे आप बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आप घर में अगर आप कुछ सीखते हो, चाहे आप खाना बनाना सीखते हो या आप जो है वो कोई भी काम करना सीखते हो, सिलाई करना सीखते हो, स्टिचिंग करना सीखते हो या आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप जब सीखते हो तो ये भी आपके लिए लाइफ में जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ बच्चे लेज़ी होते हैं, उनका दिल नहीं करता, वो कोशिश नहीं करते चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, तो उससे क्या होता है कि वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहें, चाहे आप अपनी अम्मी से घर आके कुछ सीखें या आप अपने अब्बा से कुछ सीखें कि बाहर क्या है, कैसे होता है, सब्ज़ी वगैरह ये वो, आपको हर तरह की चीज़ें कैसे उगती हैं, सब्ज़ियाँ कैसे उगती हैं, आप लोग जनरल डिस्कशन किया करो घर में एक दूसरे के साथ, कि जानने की कोशिश किया करो कि जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो कैसे बनती हैं, वो कहाँ से आती हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं वो लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए। What Adyabaji is saying is that as well as the academic learning at school, you can learn things in all sorts of ways and in all sorts of places. Your parents will be teaching you things, new things every day, and you should learn from them and learn from each other as well, because there'll be things that one person knows that somebody else doesn't know. We know that Sajila is very good at sewing, so she could teach other people how to sew. Other people are good at arts and crafts and they can teach those things. So it's very important that we try and learn in everything we are doing. Aiza. And also, if you've got sweets or anything else and you give it to somebody else or you share it with somebody else, you no longer have that sweet. But if you share your knowledge with someone else and give it to someone else, you'll still have that knowledge and you'll still know that thing. That's good. जी, जैसा कि हम आज इल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हमारा जनरल नॉलेज भी जो है वो इल्म के बारे में है
कि स्कूल में बच्चों को कैसे बिहेव करना चाहिए. जब आप स्कूल जाते हो आप एक पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, है ना. आप उनको बताते हो वहाँ पे जाके दूसरे बच्चों को भी कि आप कितने अच्छे बच्चे हो, आपके पेरेंट्स ने आपकी कितनी अच्छी तरबियत की है. तो आज हमारे साथ बच्चे जो हैं वो मैनर्स के बारे में, स्कूल में बच्चों को किस तरह बिहेव करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्या लगता है आपको, कैसे बिहेव करना चाहिए अच्छे बच्चों को स्कूल में? How should we behave at school is what we're discussing today. नवीद. Do not put a pen, pencil or coin in your mouth. जी. Why not? You can tell me why not. Yes, you tell me. Please. Because it's dirty, and if someone accidentally pushes you, it might go in your mouth. Yeah, you might swallow it. You've got to be careful not to put anything in your mouth which is not meant to be there, not food. And yes, you're right, it could be dirty and it could give you germs. Yes, let's Isra. When you're reading, don't lay down and read or lean too far forward. Yeah, don't lean back or lean too far forward. What happens if you're sitting on a chair and you lean too far back? The chair's going to fall over and you're going to get hurt. Okay, so you have to sit upright and you have to concentrate as well when you're reading something. Okay, yes. Fareed. Avoid taking ink pen before writing because the ink will come out and stain your clothes. Yeah. And also another good thing is not to put any pens in your pockets, because then if the ink does leak, then you're going to end up with clothes full of ink. Avoid using abusive language. Yeah, we should never use abusive language to anyone, and especially at school we should make sure that we don't use abusive language, or we don't speak rudely to anyone. And most important is that you don't speak rudely to your teachers. Okay? Because those are the people that are there to teach you and to help you learn. Varsha. Arrive at school on time. Yeah. Why is that important? Yes, Hassan. Because then you might miss a bit of your lesson. Yeah, exactly. If you miss only even 5 minutes every day, then over the whole year you're going to have missed so much, and then you're disrupting everybody else as well when you come in late. So how do we try and make sure that we get to school on time? What should we do? Sobi. Go to sleep early. Yeah, go to sleep early so that we wake up early and we can get to school on time. And also we should make sure we know how long it's going to take to school. And we should also remember that on some days it's going to take a bit longer. For example, if it's raining, there's likely to be more traffic on the roads, so it's going to take us a bit longer. So we have to make sure that we take into account all the reasons which might make it take longer to school. Don't read too much. Take part in other activities as well. So don't spend all your time reading and studying. You've got to take part in other activities as well, like different sports, to keep your mind fresh. कितनी दूर रखना चाहिए बुक को जब आप पढ़ रहे होते हैं? आपसे कितनी दूर होनी चाहिए? सबको पता है. सुमीता. 12 inches. 12 inches. What's 12 Gee. inches? From where you are. If you've got something in front of you, who knows? You can show me on there a bit of paper. Fareed? About here, yeah. So it's about here. So it's not too in front of your face, so you can't see what's going on because it's too near. Not so far away that you can't actually read what you're trying to read. और दूसरों की बुक्स, दूसरों की कॉपीज पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए ना. और क्या शेयर करना है आप लोगों ने? जब टीचर पढ़ा रही हो तो फिर आपको बातें करनी चाहिए. अक्सर बच्चे एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं, है ना. और स्पेशली एग्ज़ाम्स के दिनों में तो कोशिश होती है कि दूसरे की भी, है ना, कॉपी कर लें. करनी चाहिए. ये भी मैनर्स में आता है ना कि आपको दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए बल्कि ख़ुद याद करके जाना चाहिए. जी जोहा. Listen to your teacher and show respect, and do not be rude to each other, and share what you got, and let others tell them what they have, and not shouting at them and being rude. और टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? तानिया. You should
Obey the men, do not let them say something twice. Yes, if they ask you to do something, you do it straight away. Yes, Aiza. You should stay friends with good friends. Like if you're friends with someone who will teach you bad things, don't stay friends with them. Stay friends with those who are good in class and teach you the right thing. Yeah, because if you're with people that behave badly or that don't listen to the teachers, then often you become like them. Or even if you're not like them, the teacher's going to think you're with the bad group and might not pay you as much attention as you should. And you have to be the best so you can teach the other children how it is to behave. Yes, Naveed. Don't read a piece of paper or book while walking. Why not? Because you might bang into someone. Yeah, or into a lamppost. Abdul? You shouldn't copy anybody else's work because you should learn off by heart, and if you copy somebody else, their answer might be wrong, so you'll get it wrong. Yeah, exactly. You don't want to do that. Copy somebody else because you think they've got it right and you've both got it wrong. Aiza. You should also learn from your mistakes, because maybe if you're doing a test or you've answered a question wrong in class, you shouldn't be upset by yourself. The teacher will then tell you the right answer, and then you'll know next time what the right answer is. Because we all make mistakes. It's not easy to study and learn hard, and we will all make mistakes, but we have to learn from them and remember those things we've done wrong in the past so we don't make the same mistakes again. बच्चों ने बनाई है कुछ चीज़ें जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी सजीला, पहले आप दिखाएं आपने क्या बनाया है। मैंने एक पेंसिल केस बनाया है। जी। How did you make it, Sajila? Well, firstly मैंने एक ruler या ऐसा कुछ लिया था, and I first measured the zip. और फिर जितनी उसकी length थी, for example 5 inches, then what I done was get material and then I cut out for about 6 meters so that I just don't. 6 inches, not 6 meters. 6 inches. Okay, and been then a very big pencil. and then I put the zip away, and then I got that material. After I've cut it out, I folded it into halves, and then there were 2 equal sides, and here as well it was open. I sewed these 2 parts together, and I don't really need to see this last part because it's already done. And then I put the zip inside my material, and then I sewed it together. Good, excellent, well done. और आयज़ा ने क्या बनाया? Last program से आपने हमको clips बनाना सिखाया था और मैंने बनाया। जी। Excellent, good. So you learned from the last program and you made the same thing. Well done. पीछे में clip जी। You added the clip. Good. और फरीद आज कुछ बना कर लाए हैं। जी फरीद। made a poster based on the dua. जी, ये मोज़ेक स्टाइल में फरीद ने बनाया है, दुआ लिखी है। जज़ाकल्लाह। आप सबको अच्छी लगी? जज़ाकल्लाह। बच्चों, आज मैं आपको सिखा रही हूँ स्टिल लाइफ के बारे में थोड़ा सा। मैं सिर्फ आपको बेसिक मेजरमेंट्स लेना और आपको सिर्फ आउटलाइन करना सिखाऊंगी कि आप कैसे जो है वो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो स्टिल लाइफ के लिए। कोई भी पॉट आपने लेना है, कुछ भी लेना, आप उसकी पहले आपने उसको मेजर करना है। आपने उसको देखना है कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, फिर उस हिसाब से आपने पेपर अपना लेना। मैंने ये एक पॉट लिया है, ये राउंड भी है, इसकी लेंथ भी आपको थोड़ी सी और थोड़ी शेप भी इसकी अच्छी है, तो आपको होपफुली आपको पसंद आएगा और आप इसको सीख सकोगे। मैंने एक पेपर के ऊपर इसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। आप ख़ुद भी जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, आप उसके पास जाके जो है आप कर सकते हो। जैसे ये देखो, इसको अगर मैं 3 उसमें करूं तो ये एग्जैक्ट 3 पोर्शंस इसके बनते हैं। जितना ये हिस्सा है ये इसका डबल है, ठीक है। तो मैं पेपर पे भी ऐसे
3 वो बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 और ये 3। सो ये इसकी हमने टोटल लेंथ ले ली है, ठीक है। और ऐसे ही हमने अब उसकी विड्थ लेनी है। हम एक रफ सा आइडिया ले लेते हैं कि जैसे ये हिस्सा है इसका, तो इसकी विड्थ यहाँ से इतनी है जितनी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का भी हम देख लेते हैं कि अगर इसकी ये 2 पार्ट्स हैं तो ये इसकी जो यहाँ से विड्थ है वो इतनी है जितनी इसके 2 पार्ट्स हैं। हमने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, तो इसकी जो यहाँ से विड्थ है वो इसके 2 पोर्शंस के जितनी है। सो हमने इसकी 2 पोर्शंस के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हम जितना अच्छा आप ऑब्ज़र्व करोगे, जितना गौर से आप देखोगे, उतना अच्छा आपकी लाइन जो है वो ड्रॉ होगी, ठीक है। हम एक रफ साइक ले लेते हैं और एक दरमियान में हम जो है वो लाइन लगा देते हैं ताकि हमें दोनों साइडों से डिवाइड करना आसान हो। ठीक है, Deopaji took all the measurements of the thing she was going to draw. She didn't do it with a ruler, she didn't make exact measurements, but she took the measurements in comparison to her pencil, so she's able to see each bit of the pot and be able to measure how much of the page it will take up. Who likes drawing? Who does lots of drawing? So this is something that you could do. This is one of the extracurricular activities that we were talking about, apart from your studies, that you could be involved in drawing, because it's something that doesn't cost a lot. You can just do it at home by yourself. And I think the more you do it, the better you will get. And as Adiyabaj was saying, you have to look at the object very, very carefully, very closely, because if you don't look at it properly, you're not going to know what to draw. आप दोनों साइड से जो है उसको, मैं ये एक रफ सा स्केच कर रही हूँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर रही क्योंकि टाइमिंग जो है वो बहुत कम है, और इस टाइम में आपको जितना सिखाया जा सकता है बेसिक वो मैं आपको सिखा रही हूँ। इसकी जो यहाँ से इसकी जो शुरू हो रही है वो ऑलमोस्ट इसका हाफ से शुरू हो रही है, ठीक है। सो हमने ये देखना है। This isn't something that Adiyabaj has showed us before. We've done landscapes, we've done pastel drawings, but we've not done an actual object. ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हम लगाते हैं इनको हम रेफरेंस लाइंस कहते हैं। What objects do you think you have at home that you could draw? Yes, this one. Fruit, yeah, that would be a good one, yes. Flowers. Yeah, flowers. So there's lots of objects around the house that, if you think about, you can try and draw. Be nice for the next program if everybody comes with something they've tried to draw from home. बच्चों को सबसे ज़्यादा जो शौक़ होता है वो लैंडस्केप करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप अगर बेसिक ऑब्जेक्ट्स घर से उठा के अगर आप ड्रॉ करना शुरू करो तो आपकी लाइन क्वालिटी बहुत एक तो अच्छी होती है, and it teaches you how to observe things, how to look at things carefully. Because if you drew that without the spout or without the handle, it would look a bit silly, wouldn't it? जब आप एक बार आप लाइंस वगैरह लगा लोगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप शेडिंग्स की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइंस ठीक है तो फिर बाद में शेडिंग करना जो है वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन बेसिक लाइंस जो हैं वो आपकी ठीक होने चाहिए। To practice drawing curved lines. बेसिक ड्राइंग्स जो सिखाई जाती है उसमें सबसे पहले वो लाइंस की प्रैक्टिस करवाते हैं
सर्कल्स में और डिफरेंट उसमें। अगर मैं बहुत डिटेल्स में जाऊंगी तो बास बच्चे हमें ईमेल करते हैं और कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। सो मैं ये बहुत आसान उसको कोशिश कर रही हूँ कि उसमें करूँ ताकि बच्चों को जो है वो बहुत मुश्किल ना लगे। And the detail can always be put in later anyway. जी The basic outline is what we're trying to show. स्टिल लाइफ जो है वो हमेशा ऐसे सामने होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम उसमें दिखाना है इसलिए मुझे थोड़ा साइड पे होना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो दोनों पोर्शन जो है वो बराबर लग रहे हैं या नहीं, और फिर आप वापस आके अपनी ड्राइंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको मुश्किल, आपको समझ नहीं आएगी। आप थोड़ा सा दूर जाके जो है उसको देख सकते हैं। ओके, मैंने जो रेफरेंस लाइन्स लगाई थी मैं उनको बाद में, आप आहिस्ता आहिस्ता आप जितना इसको ऐसे डेवलप करते जाएंगे आपको ख़ुद ही एहसास होता जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे थी। When you step back and look at it, and then you can look at the object that you're drawing, you can see if there's something which doesn't look quite right. Because you're doing it with a pencil, you can always rub it out and retry it. बेसिक उसकी एक आउटलाइन है उस ऑब्जेक्ट की, आप आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें शेडिंग क्रिएट कर सकते हो। जो एरिया डार्क है उससे वो चीज़ों की जो है वो राउंड आपको फील होती है, या जिस भी उसमें शेप में है तो शेडिंग जो है उसको जो है वो सपोर्ट करती है। लेकिन बेसिक आउटलाइन अगर आप अपनी ठीक करोगे तो फिर शेडिंग्स वगैरह करनी मुश्किल नहीं होती। तो ये थी आज की हमारी बेसिक स्टिल लाइफ ड्राइंग, ठीक है, स्टिल लाइफ आउटलाइन ड्राइंग। तो होपफुली नेक्स्ट वीक आपको जो है हम कुछ और सिखाएंगे। So we've got some emails. This is from Naima from Canada, and she says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum, dear Shazia Abaji and Ati Abaji, wa alaikum salam. My name is Naima Noor and I live in Calgary in Canada, and I'm 9 years old. I have two younger brothers, Tafhim, who's 8, and Jazib, who's 3. And she wants to say Assalamu alaikum to all my friends in the program. And I would love to come to your program if I ever visit the UK. My family always watch your program and we like your program very much. Khudafis Naima. And the second one is from somebody in Chennai in India. And he says, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Usman Ahmed. I'm watching your program from the first episode and I like your program so much. It's very interesting and a useful program, and it's a very good initiative of MTA that you are broadcasting in 2 languages. Arts and crafts segment is my favourite. Well done, Ati Abaji. May Allah bless all MTA volunteers to a good long life. And I watch this program with my whole family, and my brothers and sisters love this program and they are all waqfina. And this is from Aisha, Ismail, Amina, Nudrat Parveen, Suleiman Ahmed, Amta Shafi and Adnan Ahmed. And it's asked us to please convey our salam to our dear Hazur. Wassalam, Usman Ahmed from Chennai in India. जी, ये एक और ईमेल हमें भेजी है। इन्होंने ड्राइंग की तस्वीर लेके भेजी है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा करके उन्होंने लिखा है, इतनी क्लियर नहीं है। मैं पहले ये ख़त पढ़ दूँ जिन्होंने लिखा है। ये इनकी वालदा ने, इनकी मदर ने लिखा है अपने बच्चों के लिए। उनके बच्चों के नाम हैं दानियाल अहमद भट्टी, मुज़म्मिल अहमद भट्टी और अब्दुल वकील भट्टी। इन्होंने लिखा है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत अच्छे अंदाज से ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और बहुत ही आसान है बच्चों को समझने के लिए और हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए भी। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम में बहुत बरकत दे। मेरे बच्चे आंटी वाले प्रोग्राम के इंतज़ार में रहते हैं और देखकर बहुत खुश होते हैं। आपको एक तस्वीर बनाकर भेज रहे हैं जो कि मुज़म्मिल अहमद भट्टी ने बनाई है। और हमारे बच्चों को सिर्फ़ एक मसला है कि दूसरी आंटी जब इंग्लिश बोलती हैं तो इनको समझ नहीं आती, वो सिर्फ़ उर्दू समझ सकते हैं। जो भी मैं उर्दू में कहती हूँ बाजी उसकी ट्रांसलेशन करती है इंग्लिश में, या बाजी जो इंग्लिश में कहती हैं वो हम उर्दू में उसको बताते हैं।
तो आप बेफिक्र रहें, वो एक ही बात होती है, आप किसी को भी समझ जाएं यही काफ़ी है। उन्होंने हम सबको सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। ये ख़त भेजा है दानियाल, मुज़म्मिल और अब्दुल वकील की अम्मी ने। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी बातें, अपनी ड्राइंग्स, उन्होंने कुछ भी उनकी अचीवमेंट, अगर आपने कोई बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए हैं तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कुछ बना सकते हैं, आप उसकी तस्वीर हमें भेज सकते हैं, हमें पोस्ट कर सकते हैं और हम दिखाएंगे उन सारे बच्चों को जो MTA पर हमें देख रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv और पोस्टल एड्रेस है kidstime 181 लंदन रोड, मॉडर्न सरे, पोस्ट कोड है SM45PT। इसके अलावा आप ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। आप टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते कुछ नई दुआओं, हदीस और जनरल नॉलेज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।